Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to the Officers Adda 24/7, the special session of your BRBL subject in the bilingual language. जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आप लोगों का जो CIB का एग्ज़ाम है, राइट, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हर एक सब्जेक्ट में। आप लोगों को ये लगता होगा कि हर सब्जेक्ट का पैटर्न सेम है, सब में एक जैसा क्वेश्चन आता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं BRBL सब्जेक्ट का, जो कि आप लोग का फोर्थ कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के जून में आए हैं, उन सब का डिस्कशन मैं आप लोगों को इस सेशन में यहाँ पे करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले आप लोग इस सेशन को जितना हो सके सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, सो दैट ये इंफॉर्मेशन हर एक CIB एस्पिरेंट के लिए पहुंच जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये जो आप लोग का पैटर्न है ना, जून से चेंज हुआ है, राइट ना। जैसे आप लोगों का CIB का सिलेबस पहले सिर्फ 2 कंपलसरी सब्जेक्ट होता था और एक इलेक्टिव पेपर होता था, राइट। लेकिन अब क्या है, अब आप लोगों के 4 कंपलसरी सब्जेक्ट हैं और एक इलेक्टिव पेपर है, यानी कि थोड़ा सा कंपटीशन आप लोगों का टफ हो गया है। तो पहली बार जब चेंज्ड सिलेबस आया था तो जून 2023 में आप लोगों का पेपर आया था। तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, और उसका एक एक एग्जाम्पल भी आप लोग के सामने शो करूंगी। तो एटलीस्ट आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जब ये एग्जाम देने आप लोग जाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, ठीक है। और ये बात बिल्कुल माइंड से हटा दीजिएगा कि सारे एग्जाम का पेपर पैटर्न, जो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, वो सेम होता है। द आंसर इज नो, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला आप लोगों का है वन लाइनर क्वेश्चन। अब ये वन लाइनर क्वेश्चन क्या होता है, ये भी हमें समझना है। इसका एग्जाम्पल भी लेके आई हूं। तो वन लाइनर क्वेश्चन इज बेसिकली, जैसे मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन में पढ़ाती हूँ, राइट। अगर आप बुक को थॉरली पढ़ेंगे तो भाई कितना दिन लग जाएगा बुक को थॉरली पढ़ने में। लेकिन जो वन लाइनर क्वेश्चंस है ना, जो हमने पेड क्लास में प्रेजेंटेशन को पढ़ा है, अगर वो हर एक वर्ड, हर एक लाइन आपको याद है ना, तो आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन इज टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज बेलमेंट, व्हाट इज अ रोल ऑफ सरफेसी एक्ट, DRT का क्या रोल है, DRT में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हमें इसको याद करने में, सॉल्व करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और आप लोग के वन लाइनर क्वेश्चन 70+ आया था जून के सेशन में। अभी तक एक ही बार सिलेबस चेंज के अनुसार पेपर हो चुका है, तो मैं जून का आप लोग को एज इट इज फॉर्मेट यहाँ पे बता रही हूँ। 70+ क्वेश्चंस आप लोगों के वन लाइनर आए थे। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन मैम कैसे होता है, देखिए एक एग्जाम्पल। कंसर्न इज डिफाइंड एज, कंसर्न जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, सहमति बोलते हैं। तो बताइए सहमति का मतलब क्या होता है। Two and more person are said to be concerned when they agree. जब आपस में एग्री हो जाते हैं तो हम उसे कंसर्न बोलते हैं। Two and more person are said to be concerned when they agree upon same thing in the same sense. मैंने भी रेड कलर सोचा कार बेचने का, अपोजिट पार्टी ने भी रेड कलर सोचा कार लेने का। Two person are said to be when the concerned when they understand the same thing, और यहाँ पे when they agree upon the same thing। तो भाई कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करिए। जो भी यहाँ पे है, निकिता मैम आज लाइव है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एवरीबडी हैव टू गिव मी रिप्लाई। एटलीस्ट गुड इवनिंग तो बोल दीजिए। गुड इवनिंग क्लास, गुड इवनिंग। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, गुड इवनिंग। बोलो 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 भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले अगर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज है ना, तो मैंने इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान लिया। ये क्वेश्चन हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉड्यूल D का है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट
दो पार्ट में डिवाइड है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो मैम ये क्वेश्चन हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन। मनी काव्या मैम कैसे हो? सबके नाम याद है मुझे, सबके नाम याद है। गुड इवनिंग। ठीक है, एक एक का नाम याद है, बस चेहरा नहीं है। चेहरा तब याद होगा जब आप लोग सिलेक्शन के बाद आएंगे हमारे पास मिलने के लिए, राइट? सो मैम बताइए इसका आंसर क्या है? आपने मैम बी बोला। Two person are said to be concerned when they agree upon same thing in the same sense। और मैम ये आपने 1 लाख रुपए जीत गए। बिल्कुल सही है इसका आंसर, क्योंकि सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई कॉन्ट्रैक्ट में अगर दो पार्टी है, एक्स ने सोचा मुझे रेड गाड़ी बेचनी है, वाई ने सोचा कि उसको भी रेड गाड़ी एक्स की लेनी है, तब जाके ये सेम थिंग सेम सेंस हुआ। अगर अलग अलग होता तो ये आप लोग का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। सो दिस इज मैम एंड सर एब्सोल्युटली राइट। तो सर मैम ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर के आएंगे तो ये तभी सॉल्व कर पाओगे ना जब प्रेजेंटेशन का वर्ड टू वर्ड आप लोगों को यहाँ पे याद है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा टाइप क्या है आप लोग का? केस स्टडीज क्वेश्चन। अब केस स्टडीज क्वेश्चन अगर मैं जून का कंपैरिजन करूं, 3 स्लॉट में आपका पेपर आता है ना। पहले स्लॉट के स्टूडेंट बहुत खुश थे, 10 से 15 क्वेश्चन आए थे। दूसरे स्लॉट के भी स्टूडेंट बहुत खुश थे, 10 से 15 आए थे। तीसरे स्लॉट के बहुत दुखी थे क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन आए थे केस स्टडीज के। सच्ची 20 से 25 क्वेश्चन तीसरे स्लॉट में। तभी तो बोला जाता है फटाफट जितना हो सके रजिस्ट्रेशन में फॉर्म को जल्दी फिलअप करना चाहिए, राइट? तो केस स्टडीज क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन होता है। जैसे वन लाइनर क्वेश्चन में तो कभी कभार किसी क्वेश्चन में अक्कड़ बक्कड़ आप करते हैं, लेकिन केस स्टडीज क्वेश्चन में ना कहानी लिखी है, कहानी को याद करिए किस कॉन्सेप्ट से हमारा मिलता है। कॉन्सेप्ट मिलते ही आप लोग यहाँ पे आंसर को बिल्कुल टिक मार्क कर सकते हैं। ओके Manakavya ma'am, you don't know the bilingual. Okay ma'am, it's okay. I will just, relate all these things in the English medium also. Don't worry ma'am. So basically ma'am, case studies question, you know that questions generally come 8 to 10 line, right? In the 8 to 10 line, the story will be there. Then you have to find the concept of the story and you have to relate that concept to the particular act. And if you get to know now the act, then you can easily do the answers. Okay ma'am, so now let's understand the case study type question. Okay, that's it. I think that is visible to all of you now. Let's start this question. Okay, 1. Mr. Balfour. What is this? Mr. Balfour, this is a story, okay, was a civil engineer who served as a director of irrigation for the government of Ceylon. Okay, so Mr. Balfour was a civil engineer who lived in Sri Lanka, right? Mrs. Balfour, that is a wife, she also lived with him. Mrs. Balfour. This is Mrs. Balfour, right? They both went to England, okay, when Mr. Balfour was on leave. So I think they are just gone for England for holiday. Okay, so just go to England for holiday. Okay. Mrs. Balfour has it's a hematite arthritis. It's a problem, right? The weather of the Ceylon would be bad for her health. Therefore, her doctor urged her to stay in England. Okay. The doctor advised her to stay in England because in the Sri Lanka, that is in Ceylon, the weather will be not suit to Mrs. Balfour. Okay. Mr. Balfour verbally agreed. Verbally, he is agreed to pay £30 every month until she returned to Ceylon at his boat, which was about to set sail. It means basically Mrs. Balfour admitted in the England hospital, and Mr. Balfour was ready to pay a kind of maintenance to her, right? A kind of maintenance to her. Now, however, when their relationship deteriorated over time, Mr. Balfour stopped paying Mrs. Balfour. मतलब husband ने बंद कर दिया पैसा देना and require amount of maintenance. उसके बाद the wife, Mrs. Mr. Balfour made suggestion that they dissolve the marriage. Oh,
हस्बैंड ने बोला भाई शादी को नाउ वी हैव टू फिनिश. दे later had a legal separation which means they were divorced. मतलब बाद में डिवोर्स दे दिया. In 1980, Mrs. Balfour filed a lawsuit against Mr. Balfour, failing to pay the sum he was required in a court. It means जो 30 पाउंड वादा किया था वो वादा मिस्टर बेल्फर ने पूरा नहीं किया. So now you have to tell me in that case whether Mr. Balfour have to give that amount to the Mrs. Balfour or not. Tell me guys. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर. आप देख सकते हैं there are two issues that arise in this case. That did Mr. Balfour ever intend to enter into some kind of agreement? क्या मिस्टर बेल्फर अपनी बीवी के साथ कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया है या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच? बताइए, क्या दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द टू person or not? Tell me. You know, in the marriage, ma'am and sir, we generally make a promise, right now? Yes, class, tell me what will be the right answer for that question. This is very simple question. हाँ जी बताइए. This can be execute or not. See class, in this case now, the promise which is made between husband and wife, that is not what? That is not come into the picture of legal relationship, because that is a simple promise, verbally promise. Exactly, Manika ma'am. In this case, husband-wife case, that is totally based on the trust fiduciary relationship. So in this case, the husband-wife never want that the verbally agreement that is made by husband to the wife, that I will pay the 30 pound every month, that is not in a written format or in a legal agreement. So if there is a no legal relationship create between the husband and wife, so the wife cannot force husband. Exactly, ma'am. Excellent, ma'am. So the contract is not enforceable. That's great. So इसमें क्लास भाई हस्बैंड वाइफ वादा करते हैं, वादा भूल जाते हैं, राइट? लेकिन सपोज इन अ डिवोर्स केस, right, in a divorce case the court allow for maintenance. So in that case ना you have to pay the maintenance, and अगर आप maintenance नहीं pay कर पाए भाई जेल जाना पड़ेगा. But this case is totally out of the legal relationship. That's excellent. Okay, but yeah, next question, section based question. अब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि मैम सेक्शंस वी डू नॉट हैव टू लर्न, सो हाउ? सी क्लास, 3 to 4 question always come in the form of section based question. So that's why you have to focus. See, if you ignore this question, that is okay, because I will not, I always used to say don't learn the section. If you learn from the PPT that I have given you, तब तो बढ़िया, otherwise नहीं. So section based question हमेशा always come only 3 to 4 question. And what are the important sections? I have already mentioned you in the PPT. If I say you about the Indian Contract Act, the important section is section 10, which talks about valid essential point of contract. Section 124, that is indemnity. Section 126, that is contract of guarantee. Section 148, contract of bailment. Section 172, contract of pledge. Section 182, contract of agency. अगर याद होए, if you can learn, please go through, otherwise no need to take any tension. In Banking Regulation Act
right? Banking Regulation Act, Section 5B talks about definition of banking. Section 26, unclaimed deposit. Section 21, loan and advance. Section 35, power of Reserve Bank of India. Section 22, license. तो ये सब मुझे कैसे याद हुए हैं? बार बार रिवाइज करके. आपको कैसे याद होंगे? जब आप बार बार इस चीज को रिवाइज करेंगे. सो प्लीज do not take tension if it is okay, and otherwise tomorrow I will bring you a very important session in which I will just highlight the sections. So this is very very much important, so everybody have to participate in the tomorrow session जिसमें मैं important sections आप लोगों को यहाँ पे highlight करूंगी, so that you can easily grab 3 to 4 questions. Is that okay? And the next is without option questions. So without options, maybe 5 to 10 questions can become in the form of without option. And in without option, what kind of questions can become? Yesterday we have already done. In the without option, section based question will be there. Without option, penalties questions will be there. Without option, limitation is there. Without options, you have a appeal days, right? So these are the things that you have to, that can become in the form of without option. Okay, the concept will not come in the form of without option, but section base, penalty, limitation, appeal, this can become in the form of question. That's it. Okay, so guys, this is all for today's class, and I hope so you people like the session. This is very important that you have to know this session. Okay, so those candidates who just want to clear this exam in right now, so do not forget to revise whatever we have done in the YT session, that is a module wise question, summary, definition. Do not forget to see that session. That is very important from the examination point of view. Okay, ma'am and sir. And those candidates who just want to crack this exam in the June session, this is your batch. Okay, so hope so we will meet you tomorrow with a very important session, that what kind of sections we have to learn. And this is your Mahapack. If you want to purchase anything, you have to apply the coupon code. आपको सिर्फ ये coupon code use करना है with 81% discount. Thank you so much for attending the session. Thanks guys.